जयपुर आया और ये नहीं देखा तो क्या देखा। आमेर नाहरगढ़ जायगढ़ देखोगे ना। मोस्टली द पिंक सिटी पार्ट आई विल एक्सप्लोर दैट। तो शॉपिंग भी थोड़ा बहुत करना है। तो बेसिकली कलर यूज होते हैं वो लिमिटेड कलर, ये 4-5 कलर है ब्लू पोट्री के, वही कलर यूज होते हैं। वो जो लंबा सा दिख रहा है वो क्या है? खम्मा घानी। मेरे पास एक ही दिन है जयपुर घूमने का। जो पूरा प्लान है, जो हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, देन अल्बर्ट हॉल, देन शॉपिंग, उसके बाद है आमेर फोर्ट, जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट, एंड देन वॉचिंग द लाइट एंड साउंड शो एट द आमेर फोर्ट एट नाइट। मैं एक्चुअली स्कूटी का पूछ रहा था, बट बोले जो अभी सब बुक हो गए ना, सुबह सुबह हो जाता है सारे बुक। देन मैंने सोचा नया जगह पे देखते देखते, मतलब मैप देख के जाना भी मुश्किल है ना, उस हिसाब से गाड़ी सही है। पहले आप जल महल देखोगे ना। हाँ। जल महल literally meaning is water palace. Maharaja Madhu Singh built this within the Mansagar Lake around 1699. But it was initially a duck hunting lodge for royals, not a luxury palace. We Aam Aadmi only can see it from the outside. But you know, during the sunset, it looks stunning like this. My driver here insisted to take my photos, but उन्होंने कुछ ऐसे फोटोज लिया। अब हंसो मत, चलते हैं आमेर पैलेस, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। Here you can easily take your car to the top, the parking of the Amer Palace, but there was insane traffic, so I thought इससे अच्छा है चल के ऊपर चले जाना। Ticket price is 102 rupees for Indian adults and आप गूगल पे से भी पे कर सकते हो, कैश रखने का उतना ज़रूरत है नहीं। But before entering the main palace, this whole area kind of won my heart. And now let's go inside and see what is waiting for us. Diwan-e-Am. It's a huge pillared hall mainly made of red sandstone and white marble. It's open from all sides, which lets the wind flow through. Perfect design to beat the heat of Rajasthan. Here the King Amer used to meet the public, so the name is Diwan-e-Am or the Hall of Public Audience. But आज के दिन इधर तो पेंटिंग का एग्जीबिशन होती रहती है। और विद इन आमेर पैलेस टोटल 22 ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इफ़ यू वांट टू नो ऑल द हिस्ट्री, गेट ए गाइड। इट्स 400 फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 पीपल, एल्स टेक द ऑडियो गाइड, और मेरे जैसे गूगल पे पढ़ाई करो और घूमते रहो। ये होल पैलेस में मेरा पूरा अटेंशन चला गया इन दीवाने खास। ये सच में बहुत खास है। But this place was reserved for very few foreign guests, ministers, or people with confidential matters. Diwan-e-Khas was really the heart of power. And for the intricate mirror work on the wall and the ceiling, this place is also known as the Seesh Mahal. Imagine an evening with your loved one under this, and the moment both of you step inside, the lights start dancing. Reflections, patterns, and tiny sparkle. There are actually very few places that make you feel it, and Diwan-e-Khas is one of those. अराउंड 2.5 घंटा घूमने के बाद मैं सीधा पहुंच गया इधर फॉर माई लंच। प्राइस तो इधर थोड़ा हाई है, बट आई गॉट अ कस्टमाइज्ड राजस्थानी थाली। कस्टमाइज्ड क्योंकि मुझे मिर्ची नहीं चाहिए था।
So the taste was amazing and worthy for the price, but it's very difficult to finish by one person. तो 1100 रुपये भी मांग ले, क्या 1100? 1100 भी मांग ले, 2100 भी मांग ले, अगर उसका पैसा भी लोगे तब हाँ। भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये पैसा किसके पास जाता है? वो तो मोहब्बती रख लेता है उनको। देखो सत्यनारायण जी शायद फोटो अच्छा नहीं ले पाते, बट ही इज एन अमेजिंग स्टोरी टेलर. By the way, for this cab, I am paying 2,200 rupees, including parking and driver, and it is booked for 9 hours. And my tour is little customized because I am going to visit Amer Palace for twice. And अभी मैं पहुंचने वाला हूँ to the Jaigarh Fort. जयगढ़ फोर्ट का अगर हिस्ट्री जानना है तो आमेर पैलेस का साउंड एंड लाइट्स को देख लो, और अगर यहाँ का स्टोरी सुनना है तो लोकल्स आर द बेस्ट. बट कितना बिलीव करोगे वो अपने ऊपर. बट आई वॉज हियर मोस्टली टू सी द जयवन कैनन व्हिच इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीसेस ऑफ मिलिटरी हेरिटेज ऑफ राजस्थान. इट वॉज मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा सुवाइस जय सिंह II in 1720 and the barrel length is around 20 feet. It weighs 50 tons and it's mounted on a massive wheel carriage. The diameter of those wheels are more than 9 feet. But it says the cannon was actually never used on a warfare. It was only once tested. The local lore says the cannonball shot from it traveled 35 kilometers far and created a lake near Chaksu village. I was in a hurry to watch the sunset from the cliff of Nahargarh, but the road to Nahargarh is not properly maintained. It's narrow, full of traffic. So when I entered the fort, the sun almost set. तो ऐसे टाइम पर मुझे वही डायलॉग याद आया. जितना भी ट्राई करो बनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं. Now towards the Amer Fort. This sound and light show is a night experience of 45 minutes to 1 hour where the powerful narration, music and dramatic lighting tells the story of 400 years. A story of battles, kings, tradition, marriages, architecture, music and the rise of Amer and then the Jaipur. This storytelling, it kind of pulls me into a zen zone. The cold weather, the voice, it felt so emotional and surprisingly very human. So right now in this early morning, it's around 4. I am going to the temple for the mangal Arati. The Govind Dev Ji Temple is one of the most emotionally charged temples for the devotees of Lord Krishna. The idol here is one of the original 7 forms of Krishna brought from Vrindavan to Rajasthan. I attended the Mangal Arati, usually happens around 4:30 am. This charged yet peaceful morning set the tone for the day. And for me it was very easy 5 minutes walk as I am staying in the Shalom Hostel within the Pink City. Here you have various type of dorm bed options. It's clean, safe and have a great hanging out zone at the rooftop. You can book it through Make My Trip, Agoda or booking.com and it's very reasonable. Streets of Pink City serves a lot of snacks morning to night. कचौड़ी हेयर इज ए लिटिल बॉम ऑफ फ्लेवर. जैसे बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर पे है स्पाइसी दाल और आलू का फीलिंग. और ब्रेड पकौड़ा इज द अनसंग हीरो. Slices of bread stuffed with aloo, dipped in besan and then deep fried. लेकिन कल मैंने जो लंच खाया वो थाली के बाद मुझे बिल्कुल भूख नहीं है. सिर्फ एक ग्लास लस्सी इज ग्रेट फॉर मी. दैट टू फ्रॉम इन के मावा शॉप, द नेवर मिस पॉइंट एट द पिंक सिटी. आज का प्लान बहुत सिंपल सा है. हवा महल, जंतर मंतर एंड देन सिटी पैलेस and obviously then the blue pottery workshop with some other shopping.
बट आज कुछ ग्लिच के वजह से हवा महल का टिकट नहीं बन रहा था और लाइन काफ़ी लंबी हो गई और मैंने मान लिया हवा महल लुक्स बेस्ट फ्रॉम द आउटसाइड एंड टुक द रोड टू द सिटी पैलेस. Jaipur City Palace is amazing. You must visit this place. It's grand, it's luxurious, and even today the royals use this palace. It has the touch of royalty Indian architecture with a subtle sense of modernization. Here the museums are awesome, very nicely showcased everything. But the most striking thing जो मुझे लगा in the museum of men's garment section, the size of Maharaja's kurta and pajama. It's extremely wide. If you have noticed the same, please let me know your view in the comment section. Now I am at the Blue Pottery workshop in Jaipur and let's hear everything from the owner of this place. ये शिव कृपा ब्लू पोट्री है, जयपुर में वर्ल्ड फेमस है यहाँ पे शिव कृपा ब्लू पोट्री. और यहाँ ओरिजिनल जयपुर की ब्लू पोट्री मिलती है और यहाँ हमारे पास करीब 1000 टाइप्स के आइटम्स बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के, काफ़ी वैरायटी है. और मेरे को इस काम को करते हुए 25 ईयर्स हो गए. ये मैंने मेरे फादर से सीखा था. और आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं? इसके अंदर जो बेसिकली कलर यूज़ होते हैं वो लिमिटेड कलर, ये 4-5 कलर है ब्लू पोट्री के, वही कलर यूज़ होते हैं इसके अंदर. वो साइड नेचुरल कलर. पहले तो सिर्फ डार्क ब्लू और स्काई ब्लू कलर ही यूज़ हुआ करता था आज के 500-700 साल पहले. ये एक बार विलुप्त हो चुकी थी, जिसको वापिस दोबारा से इसको जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी, उन्होंने चालू करवाया था. और इसके अंदर हम मिलाते हैं ग्लास और गम. तो 40 kg क्वार्ट्स के अंदर 6 kg ग्लास और 1 kg गम मिला के इसका एक पेस्ट बनाते हैं. फिर उसका डो बनाते हैं आटे की तरह. फिर उसकी एक चपाती बनाते हैं जो पीओपी के मोल्ड होते हैं, जिसमें हमें वो आकार देना होता है. फिर हाथ से इसके ऊपर डिजाइनिंग होती है, फिर अलग अलग कलर भरे जाते हैं. फिर इसके ऊपर ग्लेज होता है और ग्लेज होने के बाद में फिर ये 900 डिग्री पे फायरिंग करते हैं इसकी. और भट्ठी में पकने से पहले कलर दूसरे होते हैं, भट्ठी में पकने के बाद दूसरे हो जाते हैं. मतलब आग में डालने के पहले ब्लू कलर तो कैसे रहता है? पिंक कलर होता है वो. अच्छा, पिंक रहेगा और ब्लू हो जाएगा. फिर ब्लू हो जाएगा. थैंक यू जी. ब्लू पोटरी वर्कशॉप से शॉपिंग के बाद आई वेंट बैक टू पिंक सिटी एंड देन टू माई फेवरेट शॉप गुलाब चांद. आई एम इन लव विद देयर कॉटन. Suddenly ऐसे फील हुआ I am not shopping for things. I am probably trying to hold up moments, feelings and memories of a year that changed me in quiet ways. This year wasn't only about places, it was about people. The ones who stood by me, loved with me and somehow made my ordinary days feel lighter. Some stayed and some arrived unexpectedly. This last solo trip of the year feels like a full circle moment, a gentle way to say thank you to the roads that made me stronger and to the hearts that made me softer. Jaipur, you will always be a part of this chapter. So bye bye and thank you all for watching this.